of nearly 50 million. That's huge. And they raise the question, is India a dictatorship? Your answer is that it is on the road to becoming one. So tell me, where does it fall short? What saves it from outright dictatorship? तो ये मैं हिंदी में बोलता हूँ। ये जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी कोई स्विच नहीं है कि एक स्विच ऑन किया और देश सडनली डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बन गया। ये एक स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स है जहां पर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में, फुल डेमोक्रेसी और फुल डिक्टेटरशिप के बीच में। स्वीडन का जो वीडेम इंस्टीट्यूट है वो इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डालता है, जो कि सिर्फ 2 कदम दूर है फुल डिक्टेटरशिप से। तो मोदी सरकार ने जो भी किया है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से आज इंडिया की रेपुटेशन गिर गई है। दुनिया भर में इंडिया को अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कंसिडर किया जाता है। और जो कुछ हो रहा है, एक्चुअली जो भी कुछ मैंने वीडियोस में बताया है वो सेलेक्टिवली स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स थे जो बताए थे, जो 20 मिनट में समराइज किए जा सकते। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बताने लग गया तो यहाँ पे 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है, जो चीजें पॉइंट करती हैं इस चीज पर कि इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और हमारी जो कंट्री है वो और बद से बदतर हालत में गिरती जा रही है सरकार के अंडर। फॉर एग्जाम्पल, आप जर्नलिस्ट का लेकर देख लो। अभी मैं रिसर्च कर रहा था, यहाँ पे एक सामने मैंने रखी हुई है। 2014 और 2019 के बीच में एक रिपोर्ट ने बताया कि 198 अटैक्स हुए रिपोर्टर्स पर और 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए। 2021 की सीपीजे रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट जर्नलिस्ट इंडिया में मारे गए दुनिया में। आरटीआई एक्टिविस्ट कितने मारे जाते हैं? ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग वन ऑफ द वर्स्ट बना दिया मोदी सरकार ने। ये तो जर्नलिस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट जो मारे जा रहे हैं, उसके बाद कितने जर्नलिस्ट ने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया है? रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, इंक्लूडिंग यू इवन। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाकर खुलकर बोल भी नहीं सकते। जर्नलिस्ट को यहाँ पर दबाया जा रहा है, रिपोर्टर्स को दबाया जा रहा है, आरटीआई एक्टिविस्ट खुलकर कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से जनता को भी दबाया जा रहा है। जनता अगर प्रोटेस्ट करती है तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है उन पर टीयर गैस बरसाने के लिए। लद्दाख में अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करे तो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया, इंटरनेट पर बैन लगा दिया। जनता को भी खुलकर नहीं बोलने दिया जा रहा है। और यहाँ 2023 की एक रिपोर्ट और है जो कहती है कि इंडिया 58% ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन जो होते हैं दुनिया भर में, वो इंडिया में होते हैं। इंडिया को वर्ल्ड का इंटरनेट शटडाउन कैपिटल बना दिया मोदी सरकार ने। ये सब हो रहा है, इतना सब हो रहा है, मतलब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। As you say, ये सब हो रहा है. And listening to your answer, the impression that's created in the mind of the audience is India sounds like a dictatorship. So let me repeat my original question. What saves us from outright dictatorship? Where do we fall short of being a complete dictatorship so that you say we are on the road to becoming one, but we haven't got there as yet? गुंजाइश किस चीज की रहती है? अभी कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, और उन लोगों की वजह से वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, जब तक हम लोग खड़े हैं आखिर में, तब तक इस देश को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। जब So तक in other हम words, the people of India are the obstacle in the way to becoming a full dictatorship. हम ही हैं एग्जैक्टली जो प्रोसेस को रोक रहे हैं. एग्जैक्टली If India is not a full dictatorship, is Modi a tanasha? ये एक बार फिर से वही चीज है कि ये एक स्पेक्ट्रम है। ये कोई स्विच नहीं है कि मोदी तानाशाह है या मोदी एक डेमोक्रेट है, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। एक स्पेक्ट्रम है। मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लेते हैं। Modi is 70 to 80% towards becoming a tanasha. या दैट्स व्हाट आई वुड से, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। In the video that you made on Arvind Kejriwal's arrest, there is a line of commentary that comes towards the end. You say, जोर से हंसिए कि तानाशाह का अहंकार हिल जाए. वहां पे तो आप काफी खुला कह रहे हैं कि मोदी तानाशाह है. मैं ये बोलने का एक तरीका है। अब ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा जो 70% तानाशाह की आवाज अहंकार टूट जाए। ये बोलने में कैसा लगेगा? मुझे ये बताइएगा, एट द मोमेंट और when यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि
मैं ये बोले जा रहा हूँ मोदी तानाशाह है, इम्प्लाई किए जा रहा हूँ उसकी तरफ, इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, लेकिन मेरी आवाज क्यों नहीं बंद हुई? एक बार फिर से मैं कहूंगा कि कितने लोगों की आवाज ये ऑलरेडी बंद करा चुके हैं। कितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो खुलकर बोल पा रहे हैं, कितने लोग हैं जो खुलकर प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं किसी चीज के बारे में। कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, अब तो पिछले 3 दिन पहले की खबर है ये, यूट्यूब चैनल्स को भी ये ब्लॉक कराने लग चुके हैं। बोलता हिंदुस्तान एक चैनल था, उससे उसे ब्लॉक करा दिया गया है। आज ही की खबर है, आर्टिकल 19 और एक है क्या था, नेशनल दस्तक, इन दोनों को ऑर्डर दिए जा चुके हैं ब्लॉक कराने के। तो ज्यादा दूर नहीं है, मेरा चैनल भी ये ब्लॉक करा देंगे, मेरी आवाज भी बंद करा देंगे। तो मैं ऑलरेडी वार्निंग दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं लोगों को कि क्या हो रहा है देश में। उस दिन का इंतजार मत करो जिस दिन मेरा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उस दिन फिर कोई बोलने वाला बचेगा नहीं, और ये तब लेट हो जाएगा फिर। ये वार्निंग, ये चेतावनी आप जानबूझकर दे रहे हैं, आप डिलिबरेटली दे रहे हैं। यू आर ओपनिंग अप द आईज एंड ईयर्स ऑफ योर कंट्रीmen. दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. एग्जैक्टली। If a German or a Frenchman or an Italian or a Brit were to say, Dhruv Rathi, what's your opinion of Narendra Modi? What would be your honest answer about the man? I would not tell them much. I would just tell them read your own newspapers from Singapore to Japan to USA to Germany. All the international media is not in the control of this government. So they are printing out what is happening. Just go and read the newspapers and make an opinion for yourself. But you're also saying that what is written about Modi in the New York Times, the London Times, the Guardian, what's said on BBC or CNN is correct. It's not misleading. It's all independent opinions. There is no correct. An opinion can't be correct or wrong. It's all opinions after all. And if there are some people are saying some things, some are saying the other things, but at least in the international media, there is no pressure on them and they are able to speak freely. So just read a variety of opinions that are being published in the international media and make your opinion for yourself. The problem is, and you know this better than I do, that the impression and opinion of Modi that's conveyed in the international media is very different to what the country seems to think of him at home. The recent Pew survey suggests that over 75% of the Indian people admire him. More importantly, they like him. And yet, as you said, he's 70 to 80% a dictator. What does that tell us about the Indian people themselves? नहीं, That's ये जो सर्वेज हैं, पीयू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि if you take them at the face value, they can be highly misleading because the same survey suggests that I think Rahul Gandhi ko bhi 62 to 65% people admire in India. Same survey suggests that. And it all is a matter of perspective. आप ये सवाल कैसे करते हो लोगों से, और लोगों का असली ओपिनियन क्या है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन वो निकल कर कैसे आता है। I'll do an example. Let's do an example. I'll do a small quiz with you. Do you like eating burgers, Karan? I love burgers. They're my favorite food. Okay, let's imagine an imaginary burger here. And I say that this burger is a very healthy burger. 75% of this burger is made of whole wheat grain and full of nutritious veggies. On a scale of 1 to 10, how healthy would you say is this burger? To begin with, I would refuse it. If the burger is full of veggies, I don't want it. I'll be honest with you, I prefer a good beef burger. Sure, but I'm not asking you to rate it on a spectrum of how delicious this is. Just rate it on how healthy it is from a scale of 0 to 10. To me, the taste of the food is more important than the nutrition value. I care more about the food that I eat in terms of its taste. So if it's nutritious but tasteless, I would say I don't want it. Sure, but just give it a rating on health aspect. Oh, well, if you insist, I'll give it a rating. Very nutritious and inedible. 0 to 10. 0 to give me a number. 0 to 10. 10 is the healthiest, 0 is the unhealthiest. 5, because it's nutritious, but I don't want to eat it. No. Only give me a rating based on health. Okay, 8. 8. Okay, now let's imagine another burger here. Another imaginary burger. And this is full of unhealthy stuff. 25% of this burger is made of trans fats. And you know, trans fats are very bad for your health. They can cause cancer. On a spectrum of same 0 to 10, how healthy would you say this burger is? Oh, I would agree that it's probably at 2 or 3 and no higher, but it's probably Exactly. delicious and I'll still want to eat it. Now, the thing is, what if I tell you both these burgers are the same burger? It's just the way of asking the question that is different. Absolutely. 75% healthy burger or 25% unhealthy burger? In other words, the
Pew surveys that suggest that the Indian people are enamored of, admire, and like Narendra Modi to the extent of 75% are misleading surveys. You're concluding, or they are concluding with whatever result they want to This find. is not a misleading Don't trust survey. them. Look, the rating you gave for the burger, it's not misleading. You gave your honest opinion, what you think. It's just that the way we answer something can be different based on how the question is framed. So So I don't what know how exactly the question was framed in But the let's Pew come survey. back. Let's come back to my question rather than the survey. You're saying to me, don't rely upon the Pew surveys to suggest that 75% of the Indian people admire and love Modi. It all depends upon the way the question is asked, and it all Exactly. depends upon the way the answer is assessed. The two together can convey whatever impression the survey makers want to convey. एग्जैक्टली बिकॉज मैं अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में घूम रहा था। जितने लोगों से मिला सब ने मुझे कहा कि आपका काम बहुत पसंद आता है, आप बहुत सही कर रहे हो। हमें सही में सरकार बहुत गलत कर रही है, लेकिन हम खुलकर बोल नहीं सकते। हम शांत हैं, लेकिन हम अपना जो जोर है वोटिंग के समय दिखाएंगे। Let me, on that, take up another question. In your videos, you are sharply critical of the way governors, the Election Commission, the Enforcement Directorate, the CBI are misused by the government in power today. But each of these institutions are manned by individuals who have the choice of standing up and refusing to do what they consider to be wrong, but they don't. Why do people, particularly people who are in power, give in to Modi rather than stand up for the right thing? See, the thing is, people in constitutional positions, it's a bit harder for them. It is क्यों way तो नौकरी harder for चले them to जाएगी? speak up. You're saying it's hard because नौकरी चले जाएगी? नौकरी चले जाएगी, फैमिली पर प्रेशर बनाया जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक आम जनता को ज्यादा कुछ नहीं करना, उन्हें ना अपनी जॉब की परवाह है, उन्हें बस अपना जो जोर दिखाना है वो वोटिंग करके दिखाना है। जब वो वोट करने जाएं, इस सरकार को निकाल कर फेंके ताकि देश को बचाया जा सके। ये मैसेज आपने, बल्कि जो आपने वीडियो बनाया था अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे, आपने यही मैसेज with great passion and with great emotion you appeal to the audience that they should share the video, each of them with another 100 people, so that the entire country gets to hear the truth of the message that you were revealing in that video. How confident are you that your audience will actually do that? I checked the audience. It's nearly 25 million people this morning. That's huge. But how एग्जैक्टली। confident are you that each of those 25 will share it with another 100, making it an astonishing 125 million and more, considerably more, 250, 2,500 million. How confident are you that will happen? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे अपनी ऑडियंस पे पूरा भरोसा है। मुझे अपने ऊपर, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। ऑलरेडी 2.5 करोड़ लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, यूट्यूब पर ही सिर्फ। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उसकी क्लिप्स शेयर की जा चुकी हैं, आई थिंक, और व्हाट्सएप पर भी उसे फैलाया जा चुका है। आई एस्टिमेट दैट वन सिंगल वीडियो हैज बीन व्यूड बाय अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। But then, isn't there a contradiction or at least a sharp contrast between, on the one hand, people like governors, election commissioners, government servants, ED officials who buckle under the power of Modi, and on the other hand, the ordinary people who you're appealing to, you're telling them to wake up, you're telling them to vote against the government, you're telling them to free themselves. Isn't there a contrast and a contradiction between the two? देर इज ऑब्वियसली अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू। लोगों के ऊपर प्रेशर है, कोई अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। वैसे भी इकोनॉमिक हालत देश में इतनी खराब है, लोग अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस करें इस हद तक। इसलिए लोग चुपचाप रहते हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपनी जॉब नहीं खोनी, लेकिन अंदर से मैं ये फील करता हूँ। बहुत से लोग हैं ऐसे, और आज जितने भी पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया जा रहा है, उन्होंने भी यही चीज कई बार बताई है कि जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स उनको अरेस्ट करने आते हैं, ईडी के लोअर लेवल के ऑफिसर्स उन्हें अरेस्ट करने आते हैं, वो कहते हैं हम बस अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। जजेस के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो मुझे ये बताइएगा, मैं समझ सकता हूं कि आम आदमी पे प्रेशर है, आम आदमी को डर लगता है, वो नौकरी नहीं खोना चाहते, दे डोंट वांट देयर फैमिलीज टू सफर, बट when they go to vote they are alone in that booth. No one एग्जैक्टली। knows what they are doing. It's a completely secret vote. How confident are you that जब वो मौका आएगा, जब बिल्कुल अकेले उनको अपनी वोट पे बटन डालना पड़ेगा,
that they will actually vote against this government, that they will remember what Dhruv Rathi has said. And Dhruv Rathi's message was कि जब वो मौका आएगा, make sure you vote against. How उन्हें confident बस ये are चीज you याद that will रखनी है happen? कि जब मैं वोट डालने जाऊं, अपने देश के लिए डालने जाऊं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के पर्यावरण को बचाने के लिए और देश के फ्यूचर को बचाने के लिए। ये है आपका मैसेज उनको, vote to save your country. एग्जैक्टली। And saving your country means getting rid of this government, doesn't it? फॉर नाउ यस। इन द फ्यूचर अगर कोई और गवर्नमेंट ऐसा करती है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, तो मैं खुलकर बोलूंगा उनके खिलाफ। Bilkul. Every time the government lets down the country, we must vote it out. But for या today, the government that is letting down the country is the Modi